Hello everyone, welcome to my YouTube channel Cognitive Coders, and today in this PySpark video series we will learn how to convert RDD to Dataframe. Okay. So before going to the concept, first we need to know what is RDD. So RDD basically RDD is RDD full form is Resilient Distributed Data Set. So what is that? So it's a basic thing, very basic thing. So RDD is nothing but a collection of objects similar to list in Python. Okay. तो पाइथन में जो जैसे लिस्ट होता है तो सेम टाइप थिंग आरडीडी होता है, ठीक है। आरडीडी जो डेटा रिटर्न करता है वो एज ए लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है। पर पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में जो डेटा रिटर्न होता है वो टैबुलर फॉर्मेट में होता है, दैट इज इन टैबुलर फॉर्मेट मींस टेबल फॉर्मेट। बट इन आरडीडी आरडीडी में डेटा हमेशा लिस्ट, पाइथन में जैसे लिस्ट फॉर्मेट होता है वो लिस्ट एज ए लिस्ट डेटा को रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वो ओके। ये बेसिकली इम्यूटेबल होता है एंड इन मेमोरी प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। इन मेमोरी में प्रोसेसिंग होता है। वो मैं बाद में ये सब थियोरिटिकल होते थे। मैं इन फ्यूचर आरडीडी का एक थ्योरी वीडियो लाऊंगा, वहाँ पे मैं फुल्ली डिस्क्राइब करूंगा व्हाट इज आरडीडी एंड हाउ इट वर्क, व्हाट इज इट वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, वो मैं पूरा डिटेल्स वहाँ पे बता दूंगा। पर अभी के लिए हम लोग बस यहाँ पे आरडीडी से डेटा फ्रेम कैसे कन्वर्ट होता है वो वाला हैंडल करेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली पहले हम लोग देखेंगे आरडीडी क्रिएट कैसे करते हैं स्पार्क, ये स्पार्क में ये स्पार्क क्लस्टर में आरडीडी क्रिएट कैसे होता है। ओके, so I have some data. Okay, so for getting the RDD, I need to take one variable RDD. Okay, I'm taking one variable for storing the RDD in RDD variable. Okay, spark dot spark context बेसिकली स्पार्क में हम लोग स्पार्क सेशन यूज करते हैं स्पार्क सेशन को क्रिएट करने के लिए। पर यहाँ पे स्पार्क में आरडीडी क्रिएट करने के लिए हम लोगों को स्पार्क कॉन्टेक्स्ट को यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर तुम कोई जुपिटर नोटबुक में तुम लोग स्पार्क प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ पे स्पार्क सेशन क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि डेटाब्रिक्स में ऑलरेडी स्पार्क सेशन क्रिएट करके दिया हुआ है। पर वो अगर तुम नोटबुक में लोकल में करोगे तो स्पार्क सेशन क्रिएट करना पड़ता है यूजिंग द स्पार्क सेशन ऑब्जेक्ट। ओके, पर फॉर आरडीडी इट इज वी नीड टू यूज स्पार्क कंटेक्स्ट इन प्लेस ऑफ स्पार्क सेशन। ओके, तो उसके बाद पैरेललाइज को यूज करेंगे। तो डेटा को पास करेंगे, उसके बाद आरडीडी को बेसिकली दिखाने के लिए प्रिंट करना पड़ता है। As I have already told you that it is returning the Python list. Okay, ये collect function को use करेंगे। So I will print it here. You can see it's coming like this. Okay. तो अगर मैं इसका टाइप देखूंगा, if I will see the type of this frame, whatever data frame or something, what it will return. देखो यहाँ पे इसका टाइप है स्पार्क डॉट आरटी। ओके, ये जो डेटा क्रिएट है। ओके, so now we will learn how to convert it
convert this RDD in a data frame. Okay, so for converting this RDD in a data frame, we need to use 2DF function, which is provided by Spark system. Okay, so what we will do, RDD dot 2DF. Okay, so if I use it here, I need to store it in a variable. So I'm taking it as a DF. So here also I will change the type DF. Okay, and after that क्या करेंगे, इसको शो करेंगे. तो अभी हम शो फंक्शन यूज कर देंगे क्योंकि ये अभी हम लोगों का स्पार्क डेटा फ्रेम में आ गया. स्पार्क डेटा शीट जैसे होता है, जो मैंने मेरा अर्लियर वीडियो में भी दिखाया, वो ऐसे ये आप देख सकते हो. यहाँ पे ये एक डेटा फ्रेम है, ठीक है, और ये हम लोगों का डेटा है. ओके, सो पर यहाँ पे कोई कॉलम नेम नहीं आया है क्योंकि मैंने कॉलम नेम अभी स्पेसिफाई नहीं किया. तो कॉलम नेम स्पेसिफाई हम लोग किया से करते, बस यहाँ पे अपना कॉलम नेम पास करते हो, IT वट एवर कॉलम नेम यू वांट टू कीप, जस्ट पास इट हियर. ओके, नेम, उसके बाद कोई भी रोल, उसके बाद प्लेस, सिटी, वट एवर. तो बेसिकली यहाँ पे स्कीमा डिफाइंड होता है 2DF में. यहाँ पे ये स्कीमा लेता है, अगर तुम चाहते हो तो यहाँ पे स्कीमा आर्गुमेंट लेता है. You can see like it has. Okay, so in this way you can convert your RDD object to your Spark data. Okay, there is also another way you can use. Okay, I'm telling you, I'm showing you this. I want to store this data in DF1, that's why I'm taking. Now Spark dot create data frame. Whatever we used to do in our earlier video for creating the data frame, that you need to do. But after that you need to pass your RDD object variable here, where you have stored your RDD object here, and after that define the schema. Define the schema here, whatever schema you want to use. Okay, so it's a very much simple concept. When you will practice multiple times, it will be very much easy for you. And without skipping this video, please watch the whole thing and you will get to understand what is happening here. Okay, तो यहाँ पे क्या एक एरर आ रहा है, देखता हूँ क्या एरर है. ओके, यहाँ पे क्या बता, ठीक है. पर इसका तो ये कमेंट एग्जीक्यूशन टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा है ये वाले मेथड से. ठीक है, so basically I also prefer this method, but sometimes I also used to use this method also. So whatever based on basically based on the requirements, you need to use this method. Okay, I think you have understood the concept. If you like this video, please do like, share and subscribe my channel. A channel name is Cognitive Coders. You guys support is very much required to grow up this channel. Please support us. Okay, please support us and subscribe our channel, and like, share and comment on our video. Okay, if you face any kind of challenges, please comment on the video comment section. I'll definitely reply on that. Okay, thank you for watching my video.